नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत। फ्रेंड्स, एआईबीए ने 28 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी करके अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म किया कि डीएफएस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इन प्रोविजंस को बैंकर्स यानी बैंकिंग सेक्टर इसको पूरी तरह से फॉलो करें। और इस बारे में इन्होंने सर्कुलर जारी करके बताया है, डियर कॉमरेड्स, डीएफएस एडवाइज्ड यू टू बैंक्स ऑन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आईडी एक्ट एंड टीयू एक्ट। फ्रेंड्स, वीडियो की पूरी शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवश्य करें। You are aware that in our recent agitation and call for strike on 19th November 22, we had highlighted the increasing trend of violation of provisions of important labor laws like Industrial Dispute Act 1947 and Trade Union Act, besides provision of bipartite settlement by various bank managements. During the conciliation meeting held by CLC on 18th November, we brought to the attention of the CLC and Finance Ministry about the various instances of the non-adherence and violation of ID Act and TU Act by the managements. The CLC assured that the Department of Financial Services of the Finance Ministry will issue necessary instruction to banks and the same was minutized as under. CLC advised the DFS also to issue appropriate direction to all banks in regard to the compliance of labor laws, in particular the ID Act 1947 and the Trade Union Act 1926 by the management of banks. Based on the above minutes, the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has sent their communication dated 28 नवंबर टू चेयरमैन एमडी ऑफ द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। फ्रेंड्स, डीएफएस ने जो जारी किया है सर्कुलर, उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है, चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड द ट्रेड यूनियन एक्ट रिगार्डिंग। Madam Sir, please refer to the minutes of the joint discussion convened by the CLC on 18th November 22 over the strike notice served by All India Bank Employees Association, whereby the department was advised to issue appropriate direction to all the banks in regard to the compliance of labor laws, in particular ID Act and the TU Act. In view of the above, the banks are advised to ensure compliance of the provisions of ID Act and TU Act as applicable to the banks. Friends, DFS ने CLC के इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टिव इशू कर दिया। AIBEA भी अपना पीठ ठोके कह रहा है, बट इनफैक्ट अगर मैनेजमेंट इस डायरेक्टिव्स को जब तक पूर्ण तरह से फॉलो ना करे तब तक एडवाइजरी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि बैंक मैनेजमेंट इस एडवाइजरी का, डीएफएस के डायरेक्टिव्स को अक्षरशः 100% लागू करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।